Today we have come to an experience that is as famous as Niagara Falls itself. It's the Hornblower Cruise. हमने टिकट्स ऑनलाइन ही बुक करवा लिए थे और बस फ़ोन पे शो करके अब हम आगे चल दिए हैं जहाँ से एक्चुअली क्रूज़ स्टार्ट होगा. So this is the area where people can wait और यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं, सिटिंग एरियाज, वॉशरूम एक्सेट्रा सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. And it's the time to get the famous red ponchos. And that is a ferry. Remember, as you board the ferry, go to the top deck and on the left side of the ferry, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ बेटर हैं और इस क्रूज़ का ज़्यादातर टाइम पे आप लेफ़्ट में ही फॉल्स देखेंगे और सारा पानी जो आपके ऊपर आएगा उसे एक्सपीरियंस करेंगे. सो इट इज़ बेटर टू बी ऑन द लेफ़्ट साइड. Now, the falls that we see right in our front are the American Falls. Actually, just to give you a little information, Niagara Falls are actually a group of 3 falls together. American Falls, Bridal Wheel Falls, ये दोनों American side पे हैं और जो wider है ये American Falls है और वो छोटा वाला Bridal Wheel Falls है और जो सबसे बड़ा है वो Horseshoe Falls है जो Canadian side पर है और ये फेरी बिल्कुल उसके एकदम हार्ट तक जाती है. And this is the main one, Horseshoe Falls. वो तो नहीं देखेगा, छुट्टी ना भी मुड़ेगा तो छोड़ दो.
And now we are headed back. It was a wonderful experience and a must for anybody visiting Niagara Falls for sure.